Aha, बहुत दिनों बाद दोस्तों. Well, here we go. Hello and welcome once again to Are You Here for the Cricket brought to you by Dafa News. We got another live session. It's been a few days. मैं जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार जब हम आप यहाँ पे जुड़े थे, I said I need a brief break, but I didn't get that break. I was in Mumbai shooting a web series, and then I was also caught up in another bit of work. So here I am. We're talking cricket once again. मैं आप लोग से आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ to get this live stream going. हफ्ता हो गया वर्ल्ड कप फाइनल के बाद. बहुत लोग अभी भी गुमसुम होंगे, कोई इमोशंस होंगे लोगों के, कोई गुस्सा होगा, कोई 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 खुश भी हो सकता है गिवन द फैक्ट दैट इट्स बिकम अ रिवॉल्विंग डोर ऑफ द इंडियन टीम नॉट एक्चुअली विनिंग ट्रॉफीज. जो भी आपके जज्बात जुड़े हैं वर्ल्ड कप फाइनल से, अभी जो ये श्रृंखला चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच. आई मीन येस्टरडे आई वाज सीइंग, आई गॉट बैक फ्रॉम, खुद मैं एक मैच कल खेल रहा था रात को, मैं आया वापस तो आई कॉट द लास्ट वन आवर सो ऑफ दैट मैच. और बता रहे थे जियो वाले के 19.5 करोड़, तकरीबन 20 करोड़ तक लोग देख रहे हैं. मैंने कहा अच्छा, तो मतलब वर्ल्ड कप फाइनल से लोग आगे बढ़ चुके हैं. जो दर्द है, जो दुख है, वट एवर गम है, लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं. क्या क्या जनता खुश है? क्या जनता खुद भूल गई है वर्ल्ड कप फाइनल को? क्या जनता भूल चुकी है कि इस इंडियन टीम को कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए 10.5 साल हो गए? आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ लोग से, सोशल मीडिया पे इंगेज करता हूँ, व्हाट्सएप पे इंगेज करता हूँ. कल जहाँ पे मैच खेल रहा था वहाँ पे बाकी 10-11 लोग से बात कर रहा था. आई जस्ट वांट टू गेट अ सेंस ऑफ द पल्स कि देश क्या क्या सोचती है. और दीज T20s दैट आर गोइंग ऑन, ये किस किस लिए खेले जा रहे हैं? क्या इनका कोई मकसद है? क्या फ़ायदा रिंकू सिंह के बाउंड्रीज का, रिंकू सिंह के छक्कों का, और यशस्वी जायसवाल के मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट से? मतलब जब 20 करोड़ लोग, चलिए देश की आबादी बहुत 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 ज़्यादा है वहाँ से, लेकिन क्या 20 करोड़ अगर लोग ये मैच देख रहे हैं तो क्या लोग खुश हैं? आईपीएल की बातें हो रही है. आईपीएल जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो आईपीएल की बात शुरू हो गई. हार्दिक पांड्या 15 करोड़ के लिए वापस मुंबई इंडियंस गए, कैमरन ग्रीन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया. आईपीएल डेडलाइन, the media, I think we're also to blame for this. We switch very very quickly. आईपीएल की बातें हो रही है. जब तक आईपीएल शुरू होगा 4 महीने बाद, क्या पता लोग कितना याद करेंगे इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को. एंड देन आई एम सीइंग players are going for events. शुभमन गिल was snapped looking at his dapper best at an event. मतलब what is the lingering sentiment? क्या हम लोग खुश हैं कि टीम 2-0 ऊपर है? कल 44 रन से जीती ये ऑस्ट्रेलिया की टीम. इंडिया दे बीट देम. आई एम लुकिंग एट द प्लेयर्स. मैं मार्कस स्टोइनिस की शक्ल देख रहा हूँ. मार्कस स्टोइनिस क्या सोच रहे होंगे? हाँ भाई, यहाँ तो आप लोग बड़े शोर शराबा कर रहे हो, विकेट सेलिब्रेट कर रहे हो, वर्ल्ड कप तो हमारे पास है, आपके पास क्या है 10-12 साल में? तो आई वॉन्ट टू नो, लाइक आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल वॉचिंग दिस शो, कॉमेंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? क्या 20 करोड़ लोग अगर जियो के ऐप पर लाइव मैच देख रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड कप भूल चुके हैं? क्या वो इस बायलैटरल सीरीज से खुश है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं जानते, अगर आप भूल चुके हो, आई एम गेसिंग यू डू नो, ये इंडियन टीम नंबर 1 टेस्ट टीम, नंबर 1 वनडे टीम, नंबर 1 T20I टीम, अभी इस वक्त आज के दिन आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रैंक्ड है. फ़ायदा क्या? ट्रॉफी तो जीत नहीं पाए. पिछले साल T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हुए, 10 विकेट से हारी ये टीम इंग्लैंड से. उसके कुछ एक महीने पहले एशिया कप फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, जब वो एक T20 फॉर्मेट में खेला गया. 2 साल के बीच टेस्ट क्रिकेट खेलते नंबर 1 टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंची, वहां नहीं जीत पाए. और इस साल नंबर 1 रैंक्ड वनडे टीम 10 मैच जीती, लेकिन फाइनल पहुंची तो वहां एक अलग टीम नजर आई और आप हार गए. तो भले ही आप तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 हो, लेकिन जिस मकसद के लिए, मेरा मानना है, लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, टीम्स बनती हैं, टीमें टूर्नामेंट्स में एंटर होते हैं, वो होते हैं ट्रॉफी जीतने के लिए. और जब आपका पिछला आईसीसी ट्रॉफी जून 2013 में आया, यानी कि 10.5 साल हो गए, और उससे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप जीते हुए 12 साल से ऊपर हो गए, तो क्या फ़ायदा? क्या आप खुश हैं? क्या आप लोग जो ये शो देख रहे हैं, जो ये शो ख़त्म होने के बाद जुड़ेंगे इस वीडियो के साथ, जो लोग शायद कमेंट करेंगे इस पोस्ट पर जब मैं इसे सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा, क्या आप लोग खुश हैं इस टीम से? क्या आप लोग उसी शिद्दत, उसी प्यार से हर दिन उठते हो, टीम को सपोर्ट करते हो, टीम को फॉलो करते हो? आर यू ओके विद द टीम बीइंग नंबर 1 इन T20s, नंबर 1 इन ODIs, नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट विदाउट एनी ट्रॉफी टू शेयर फॉर इट? ना आप T20 वर्ल्ड कप के हकदार हैं, ना आप WTC फाइनल के हकदार हो, ना आप वनडे वर्ल्ड कप के हकदार हो.
क्या रैंकिंग्स सिर्फ बायलैटरल सीरीज से बनकर हमें खुशी देगी? आई डोंट नो, आई वांट टू नो। मैं जानता हूं वेयर आई स्टैंड ऑन दिस मैटर एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट, एज अ फैन, as someone who has a vested interest in what the Indian team does. Um, I mean, I know where I stand, but I want this show to be about you, the people watching, the people who will watch this show when it ends. Comment, come back, share your views, whether you feel this is totally fine, that the team can be number one across formats. अगर बिना ट्रॉफी के आपको खुशी मिलती है इस टीम से, अगर आप सपोर्ट करते हो, बड़ी बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बट शेयर करिए। आई वॉन्ट टू हियर कि आप लोग क्या सोचते हो इस इंडियन टीम के बारे में, जो वर्ल्ड कप के 4 दिन बाद, वर्ल्ड कप हार के 4 दिन बाद एक 5 मैच की श्रृंखला खेलने लगी। अलग टीम है ऑफ कोर्स, सिर्फ सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड मेंबर्स हैं जो इस सीरीज में शामिल हैं। बट आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी दैट द शो जस्ट कीप्स रोलिंग ऑन? और अगले जुलाई में जब T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा और भारतीय टीम के पास एक ट्रॉफी नहीं होगी, आई होप दे गेट इट, बट व्हाट इफ दे डोंट, क्या आप लोग फिर भी इस टीम को सपोर्ट करेंगे? आप इस टीम को आपके हर मैच, इस टीम के हर मैच आप देखोगे? लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो, बिकॉज आई रियली वांट टू नो व्हाट यू, द ट्रू क्रिकेट फैन, हैज टू से अबाउट इंडियाज नॉन परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू विनिंग ICC ट्रॉफीज। चलिए, मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। अब आते हैं आपकी व्यूज पर, आपके कमेंट्स पर। व्हाट डज द जनता फील अबाउट दिस? विनोद काका कह रहे हैं नमस्ते बाजी, नमस्ते आपको भी। विक्टर कह रहे हैं इवन इफ इंडिया विंस एनी T20 फॉर्मेट, देयर इज नथिंग बेटर और एलिगेंट देन ODI 50 ओवर्स। I respect your views. Sagar keh rahe, I was shocked, absolutely shocked to see the kind of crowd there was in first T20. Understandable. Good morning, Prabhakar. Good to see you again. Missed few live stream. Jio's cinema streaming service sucks and I still not feel happy India is winning. Yes, I was hoping to see such a comment. Pranav Shukla जुड़े हैं. Jio doesn't show many viewers watching the game at present. Jio shows total number of viewers that has watched. ठीक है. 20 करोड़ लोग जुड़े थे एक फालतू T20 आई देखने। क्या आप में से कुछ लोग थे जो जुड़े? क्या आप खुश हैं इस टीम के परफॉर्मेंस से? बताइए मुझे। निहार कह रहे इट्स ओनली 1 week since final loss and true colors are seen. IPL खेलो, पैसा बनाओ। Pandya only playing 5 matches for India while plays all IPL matches. Boycott IPL. Not the first time a viewer has posted these sentiments. Tough to ignore your point. Livingston कह रहे money has taken over the fandom. It seems that way, no? Greed, greed, greed. The endless greed of Indian cricket and global cricket as well. Broadcasters. Anup, point यही है कि ऐसा स्क्वाड बनाए जो आगे जाए और अगली 10 साल में कम से कम 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज ले आए। और ये यंग टीम वो भरोसा देती है, केयरफुल, सस्टेन एंड मेंटेन। उम्मीद पे दुनिया कायम मेरे दोस्त। Victor saying the viewership of T20 is revenge watch. Just watching to see if Australia get defeated. If it was any other team, it wouldn't have gotten this much viewership. I'm saying this Indian team could beat this Australian team 5-0. What is the point when next year they don't win the T20 World Cup? What is the point? India became number one across these 3 formats by beating every single team at home, barring Australia in 2 one-day series. तो फायदा क्या है? विक्टर मित्रा, क्या आप उनमें से हो जो खुश हैं हर दिन उठ के काम के बाद वापस आके इस इंडियन टीम को देखना? Are you happy with the endless revolving door cycle of just winning bilateral series and one Asia Cup here and then when it's been 10.5 years since the team won ICC trophy? Are you okay if the team fails to make the finals, loses semi-finals, fails to make the finals, reaches a final and then doesn't win? Will you be one of the ones who just go back to watch a random bilateral series जहाँ पे रिंकू सिंह छक्के लगाते रहेंगे और हम बोलेंगे वाह वाह, जहाँ पे हार्दिक पांड्या मिस करेंगे आधा वर्ल्ड कप, लेकिन जब खबर आएगी कि वो मुंबई इंडियंस वापस जाएंगे 15 करोड़ के लिए ट्रांसफर डील, क्या आप उनमें से हो जो बोलेंगे यार वाह क्या प्लेयर है? आई एक्चुअली वांट टू नो। आज मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग के व्यूज़ क्या हैं इंडियन क्रिकेट को लेकर, फ्रॉम द एंगल ऑफ endless money, a superb fan base, a superb talent pool, but 10.5 years without a single trophy. बताइए मुझे, what do you feel about it? विनोद काका कह रहे हैं जमी पाजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर जो बात आप बोल रहे हो यही बात मैंने 2018 में जब बोली थी तो आपने मुझसे डिसएग्री किया था। बताइए भाई, 2018 में तो मैंने कभी मैं कभी था ही नहीं इस चैनल पे, तो अगर आप मुझे याद बताओगे कि 2018 में मैंने ऐसा क्या कहा था, मैं तो नहीं, 2018 में तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स एडिटर था। खैर जो भी है, आप मुझे याद दिलाइए कि 2018 में मैंने आपसे क्या कहा था। लेट मी नो प्लीज। Jaya Krishnan is back. Good to see you, my friend. Jay bhai, I'm happy because our young players are playing very good cricket. That's fantastic.
India must select these youngsters for World Cup, batsmen specifically. Our main senior batsmen are playing T20 for almost 1 decade. That's very, very true. I hope that for the T20 World Cup, they just send these youngsters. Of course, you'll send Surya Kumar Yadav, you need him. But I'm saying I would much rather deal with the team disappointing from a bunch of youngsters because the expectation would not be so much. And I've said it many, many times before on this channel, in these live streams, as well as in my other recorded videos. T20 should be a young man's game. And I hope the next June, when the team goes, these youngsters are given a chance and they don't go back to non-performing veterans. But who knows? SS98 has brought again his 11. Jaiswal, Ishan, Sky, Tilak, Hardik, Rinku, Akshar, Deepak Chahar, Kuldeep, Bumrah, Arshdeep. I'm assuming this would be your, you mentioned T20 World Cup 11. Jaiswal, Ishan, Kishan. So you've not taken Gill. Interesting. Okay, interesting. You've taken Ishan instead. And he's your keeper. Sky at 3, Tilak, Hardik, Rinku, Akshar, Deepak Chahar. Deepak Chahar I would never want to see again playing for India. Just too disappointing. वो तो नहीं आएंगे. Kuldeep, Bumrah, Arshdeep. बाकी सब सही है. Uncle is saying people will forget IPL auction will come and focus will be shifted. I mean, the auction it hasn't even started, but the news about who's gone, who's been released, who's been retained, it's overtaken even this T20I series we're going on. So, ठीक है, media's got a job to do. I know it. I'm part of it. There is pain and nothing else. Team will not win anything. Will be fake hype. That's it. Well, that's it. I think you're right. IPL franchises have such strong fan bases कि अगर मुंबई इंडियंस जीती है या KKR जीतती है या CSK जीती है तो उनके फैंस बहुत बहुत खुश होंगे. सो जो भी है, इट्स अ फैक्ट आई गेस. कड़वा है लेकिन सच है. Jio's numbers are probably big because of free streaming. There's no doubt. But I'm saying, are the 20 crore people who watch these matches, have they moved on from the World Cup final? I want to know that. There's definitely no sense in all these series. Yep, I said it. I call this the most inconsequential series of the year in my preview show. Prabhakar Gare, I still believe we missed a golden chance. You're not the only one. I think everyone on this show will have the same view as you. We would have won that, no excuse. I believe fans also deserve some happiness, and that doesn't come from winning bilaterals. I would hope, my friend Prabhakar, that bilaterals don't give you any satisfaction. I hope that that's true. Priyank Kere, I stopped watching cricket. I don't blame you, my friend. I don't blame you. Paulie, hope India does not include players on reputation in T20 World Cup. I hope so, but I got a sinking feeling they will. A stable 15 players need to be persisted with. Bilkul sahi keh rahe ho aap. Seeing the move on thing after World Cup, I doubt are we becoming superficial society. Wonder why UK never won FIFA while host EPL. Who knows? That's a good point you've raised. When did England last win the FIFA World Cup? 1966 or something like that? Mid 60s. So yeah, who knows? Do you see KL Iyer at T20 World Cup? Iyer for sure. KL, I wouldn't want him there, but I know the selectors will take him. So yes, they will both be there. Rumors are that KL will captain the team in South Africa. Why? Just why? I know, my friend, I'm on the same page as you. He should be nowhere near the T20 setup. Those were my exact words in Hindi and English on this channel, as well as Cricket Next, as well as News 9 Live all through this year. Jaiswal is already doing very well and he should be groomed. Bilkul, I agree. Jaiswal should be there. Bhai, you missed my comment. Sorry, which was your comment, my friend? I didn't see it now. By the way, Rinku and Jaiswal are the fearless cricketers we both need. I agree with you. We both need them in... we need them both, sorry, in the format. Anup bhai कह रहे हैं एक counter question. Under 19 World Cup में India is dominant like Australia in men's World Cup. तो क्या under 19 करना छोड़ दे only because Indian main team doesn't win a World Cup? देखिए, अंडर 19 क्रिकेट से इतिहास गवाह है मेरे दोस्त अनूप. अंडर 19 क्रिकेट से आप बहुत 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 कम निष्कर्ष निकाल सकते हो. अंडर 19 वर्ल्ड कप सिर्फ एक स्टेप है. प्लेयर कहाँ बनता है, प्लेयर कहाँ टूटता है, प्लेयर कहाँ आगे के लिए सिलेक्ट होता है, प्लेयर कहाँ कभी कभार फेल हो जाता है, वो है अंडर 19 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जंप पे. बहुत बहुत प्लेयर्स ही, बाकी देश का छोड़िए, इंडिया के अंदर बहुत बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 25 साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं, और उस 11 में से बहुत बहुत लोग 2-3 साल भी क्रिकेट नहीं खेल पाए. कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई वापस अपने गांव गया, कोई देश छोड़ के अमेरिका में फ्लोरिडा में ट्रक चलाता है. या मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिनसे मेरी बात हो चुकी है. मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं नाम लूँगा ज़रूर उन्मुक्त चंद का. उन्मुक्त चंद ने 2012 में T20 वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया में. बेहतरीन टीम थी, 100 लगाया फाइनल में. वो लड़का क्या 5 साल खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट.
सो अंडर 19 में आपकी डोमिनेंस जितनी भी हो उससे लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते वो देखकर। आप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी क्रिकेट में, इंटर स्टेट क्रिकेट में, आईपीएल में, आप वहां जो सफल होते हो आपको वहां से जज किया जा सकता है। तो अंडर 19 आप देखिए, पृथ्वी शॉ अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे, क्या उखाड़ा उसने? कुछ नहीं उखाड़ पाया। वो लड़का कम से कम 3 या 5 साल दूर है अंतरराष्ट्रीय सिलेक्शन से। सो आई पर्सनली डू नॉट जज सक्सेस ऑफ टीम्स एट द अंडर 19 लेवल। आई वेट टू सी कि इस बैच ने रणजी ट्रॉफी में क्या किया अगले साल, अगले महीने। तो आपको जो जजमेंट, आपका जो असेसमेंट होता है अनूप भाई, वो अंडर 19 पे नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल तारीफ करो, खुश रहो, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ मैसिव yardstick by which you judge players or a cricketing landscape. Soothing meditation music, only Rinku Jaiswal showing grit. Rituraj कमल, कमल कौन है भाई? विल बी इन सिचुएशंस। आईपीएल बकवास फेक। आईपीएल अगेन, आईपीएल शायद आप लोग को बहुत बहुत खुशी दे, आपके अलग अलग टीम्स होंगे, बट आईपीएल अपने आप से पूछिए आईपीएल है क्या? आईपीएल एक प्राइवेट कॉर्पोरेट टूर्नामेंट ही है, नहीं? अब वो टूर्नामेंट की हैसियत इतनी है, उसमें पैसे इतने हैं, उसमें व्यूशिप इतनी है कि उसी से टीम में, इंडियन टीम में लोग सेलेक्ट होते हैं। बट इट्स जस्ट अ कॉर्पोरेट टूर्नामेंट रन बाय बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे। Killer mentality, Mamba mentality is missing in India, in all Indians. Again, broad statement. I'm not going to go there. I won't agree with you. That's why I truly believe Neeraj Chopra is the greatest sportsman ever India has produced and remain that way. Bilkul, that part I will agree. Neeraj Chopra is the most successful because he's done it on his own and he's won multiple accolades. He's won the highest medals, the highest prize there is in his discipline. So yes, I agree with you. He is India's best ever. Rinku should include in T20 World Cup team. बिल्कुल विवेक, रिंकू तो जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। The World Cup finale night was the biggest nightmare for me. Still hurts so much. I know, my friend. There are rumors that Dravid will leave and Lakshman will become coach. Nihat, these are not rumors. I mean, I said this during the Asia Cup कि Rahul Dravid is not going to renew his contract. चाहे नवंबर 19 को Rahul Dravid trophy ले आए या ना ले आए. It has been mutually accepted from the BCCI and Rahul Dravid that it's not going forward. So they're not rumors. This has been known to us in the media for several months that he was not going to continue. हाँ, ये खबर अब बाहर आई है, but they're more than rumors. It's fact. Rate Sky as a captain, my friend. Based on what? 2 matches against a second string Australia. It's nothing to rate for me. And like I said before on the show, India can win 5-0. Sky can captain 5-0. I really couldn't care for this series. If we're looking at dissecting Sky's captaincy in the most inconsequential series of 2023, then we're just running in circles, no? It doesn't matter what Sky does as a captain. I'm not even watching these matches. This is an utterly important series. So yeah, I really couldn't care what Sky does. Why is there no press conference regarding our performance in World Cup? Well, this is a country where the Prime Minister has not given a press conference in 9 years now. So you expect the Indian team to come and talk about problems, admit defeat? नहीं भैया, नहीं। IPL ऑक्शन आ रहा है ना, टीम आगे बढ़ चुकी है, शुभमन गिल जा रहे हैं, अवार्ड शो पे जा रहे हैं, फैशन शो पे जा रहे हैं, टीम, life goes on, people don't care भैया, nobody wants to accept weaknesses. If this was pointless, it wouldn't have been happening. No, absolutely wrong. It's happening because there's a point to this. The BCCI needs money. The BCCI makes money. The ICC has there's a calendar, there's a schedule, there's an FTP. So it's going on. For some people, it matters. For a Rinku Singh, it matters. But I'm saying for me, not a week, sorry, 4 days after that dismal, abject World Cup performance, जहाँ पे 10-0 एक पल में 0 बन गया, उसके 4 दिन बाद सीरीज हो गई, फैंस स्टेडियम जा रहे हैं, फैंस इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर वाज मॉब्ड एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट अ डे आफ्टर इंडिया फेल्ड, ही फेल्ड। हमारा ही कल्चर ही ऐसा है कि हम स्टार्स को देख के बहुत बहुत impressed हो जाते हैं. So there's a point to it. I don't agree with the point. I see no point in doing this. I'm doing this because it's my job. I get paid to analyze cricket. But you, the fans, are you happy? Is life, Manish, going on for you? The fact that it's been 10.5 years without a trophy? There's a point to it. But to my mind,
it amounts to nothing. ये टीम 5-0 जीते, फायदा क्या? अगले साल क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी T20? मुझे लगता नहीं है दोस्त. तो from that sense it's all pointless. Make your money, boost your social media following by hitting sixes, by taking wickets. um you can, आप 44 रन से जीते, आप 2 रन से जीते, आप 100 रन से जीते, फायदा क्या? क्योंकि सबको पता है, आपके मन में, आपके दिल में रियलिटी है कि अगले साल इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी. और फिर हम बात करेंगे कि क्यों नहीं किया. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? दैट्स माय पॉइंट मनीष. लोगों को आदत हो गई है और मैं भी उसमें शामिल हूं. सही बात है दोस्त. अमनदीप, क्या करें, आप लोग इंडियन फैंस हो, मैं भी फैन रहा एक बार. अब ये मेरा जॉब है तो मैं करूंगा, क्योंकि भाई नौकरी तो करनी है, पैशन को जिंदा रखना है. लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है उस पैशन को जिंदा रखना जब टीम 10-0 करे या 15-0 करे. सबसे बड़े दिन में आप फेल हो गए ना. तो खैर, बात मेरी नहीं है, बात आप लोग की है. Do you think management will make one more blunder for going to IPL to finalize team? Sandeep, that's a very good question. I was asked this question on a live show a few days ago, and I said I would hope that next year's IPL does not factor into World Cup selection, because the Indian team, like all the other teams, will have to confirm to the ICC their World Cup team about a little bit before halfway through the IPL. I would hope that much before that IPL, the team has locked in the 15 it wants to take, the 20 probables. But you know, someone suddenly scores runs and he could come in. And unfortunately, they made the same mistake with Ashwin by bringing Ashwin very, very late into their World Cup plans after Akshar Patel got injured. And what was the point of Ashwin? He played one match. Was it worth bringing Ashwin 18 months after his final ODI for one match? I think the answer is there. So I have a genuine concern that next year's IPL will sway selection to a detrimental effect, is what I want to say. पहले हम सेमीज में हारते थे, इस वर्ल्ड कप में वो जिंक्स टूट गया. अब आगे का गोल फाइनल का जिंक्स तोड़ने का है. बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम. Can India win World Cup 2024? Pawan, it can, because there's no saying it cannot. But do they have the team? Do they have the players? I think what gives me the most concern is कि अगले साल का वर्ल्ड कप वो वेस्ट इंडीज में है, जहाँ पे शुभमन गिल नहीं चले हैं, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव नहीं चले हैं. तो क्या इंडिया के पास ऐसे 15 प्लेयर्स हैं जो इन स्लो एंड लो कंडीशंस पे कंसिस्टेंटली चल पाए? मुझे उस बात की फिक्र है. Shreyas Iyer, I believe, would be the best bet to succeed there. Jaiswal, I would hope the team wins, but I just don't think. मेरे ख्याल से 190 के आसपास दिन बचे हैं T20 वर्ल्ड कप तक. I don't think India are even thinking that far. Are they picking the right players? You're still persisting with Mukesh Kumar. You're still persisting with certain players जो शायद नहीं होंगे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद इस वर्ल्ड कप में. So I wish them the best, but I have serious reservations about India's chances. प्रशांत कह रहे ओपनर्स बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खेलना पर क्या प्रॉब्लम होता है? भाई वो सिलेक्शन ही ऐसा है. कभी आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर में भेजते हो, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ओपनिंग भेजते हो. टीम जस्ट डज नॉट सीम टू बी ऑन द राइट पेज. दैट्स माय कंसर्न. सुखराज सिंह कह रहे हैं आईपीएल ओनली फॉर मनी, बीसीसीआई आल्सो नीड मनी. दैट्स इट. इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं जीत सकता. कभी तो नहीं, बट हाँ, जब आईपीएल ही आपका एंड ऑल और बी ऑल है तो मुश्किल है दोस्त. ऋषभ सिंह कह रहे हैं आईपीएल होने से इंडिया में लोगों को एक फ्यूचर दिखेगा मनी अर्न का, जिससे मैक्सिमम टैलेंट मिल सकता है. बात तो सही है. I think money is more important than anything else for BCCI. Tough to say no when you see the results. Yes. I met Rituraj Tilak will fail. अच्छा, Tilak. I heard Kamal. मैंने कहा ये कमल कौन है? I mean, let's hope that these youngsters are given an extended rope, extended run, ताकि ये और भी अच्छे हों, ये प्रेशर को झेल पाए. रिंकू सिंह मुझे कमाल के प्लेयर लगते हैं. जब आईपीएल के बाद वो सिलेक्ट नहीं हुए तो मैंने इसी लाइव स्ट्रीम पे कहा था कि हौसला रखिए, कम समय में रिंकू सिंह देश के लिए खेलेंगे. और वो आए थे. आई थिंक बाय द मंथ ऑफ अगस्त ही वाज एन इंटरनेशनल प्लेयर एंड ही डन सम फैंटास्टिक थिंग्स आयरलैंड में, एशियन गेम्स में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. सो आई होप दैट सच प्लेयर्स हु आर 25, 26 they are invested in and then they form the bulk of the team for the next decade. VVS will be next coach. Yes, it's confirmed. So we're not winning. I see World Cup also. Hello, William. What's up with the Hardik Pandya saga? Something related to financial fair play? Looks that way. I mean, 2 years and see, look, like I said, IPL is not international cricket. It's a corporate tournament. There's no allegiance. There's no loyalty. पैसे दे दो, हम कहीं भी जाएंगे.
Hardik Pandya, a disgruntled Hardik Pandya, left Mumbai Indians, went to Gujarat, won the title, did some great things in the first year, got the team to the second year, and now he's gone back to Mumbai Indians. Well, it just shows there's no loyalty. These guys don't care what team they play for. Show me the money, baby. Udbhav Mehta, do you think the current Indian players can reach the winning mentality of Australia? Absolutely no chance. Keeping in mind their lack of accountability and extreme fame money. If yes, who can win? No. नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई दबाव नहीं था इस वर्ल्ड कप में. ऑफ कोर्स दे विल से ऑपोजिट थिंग्स. दे डिडंट हैव द होम बेस, दे डिडंट have this pressure of knowing that the final will be played at a stadium named after that country's respected prime minister. That said respected prime minister will come to watch them. इस सब में इसको इस वर्ल्ड कप को एक जंग बनाया गया था, एक बैटल फील्ड बनाया गया था. इंडिया करेगा, इंडिया करेगा. ऑस्ट्रेलिया डोंट गो इनटू क्रिकेट टूर्नामेंट्स थिंकिंग ये कोई जंग है, ये कोई जंग का मैदान है, ये बैटल नहीं भैया. ये क्रिकेट है, ये गेम है. इसमें बॉल होता है, इसमें बैट होता है, और हम वही करेंगे. दे जस्ट रिलाइड ऑन द बेसिक्स. वेरी फ्यू पीपल बैक देम व्हेन दे वर नंबर 10 ऑन द पॉइंट्स टेबल ऑन October 15th. इनकी मीडिया ने इसको जंग नहीं बनाया. इनके न्यूज़ चैनल्स, इनके एंकर्स, इनके जो वो चिल्लाने वाले स्पोर्ट्स एंकर्स होते हैं, कभी इसको जंग नहीं बनाया. भाई ये क्रिकेट है, एंड द टीम दैट प्लेड क्रिकेट एंड वन द फाइनल. सो सिंपल सी बात है. लेट्स नॉट कंपेयर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम एनी अकाउंट्स एवर अगेन. भाई आई वाज सेइंग BCCI ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ फूलिश इंडियन फैंस. ये तो मैं कब से कह रहा हूँ, साल भर कह रहा हूँ. टू मेक अस फॉरगेट लॉस दे क्रिएटेड स्पेकुलेशन ऑन IPL ऑक्शंस. पता नहीं, हो सकता है, who knows. Feel we need someone like John Wright who can change the culture completely, but it still won't cure the maladies of the board. Yep, I agree. It won't. It's too deep. The problem is systemic. Ravi Shankar is saying RCB have hit a big jackpot with the addition of Cameron Green. See, this is what Ravi Shankar is, a very dedicated Indian cricket fan, but Ravi Shankar has moved on. Ravi Shankar is one of the fans who's been taken for a ride by the BCCI and the media. कोई बात नहीं. Cameron Green will be a big asset. See, Ravi Shankar, I mean, I love your passion, but this is what I'm talking about. You're here just to discuss the IPL auction. Whatever. You've also forgotten the 10 days ago, what happened, a week ago. But ठीक है, he's a player who can also open the innings. Correct, he's a massive asset, no doubt. Cameron Green is a big player for, literally also for Australia. Bro, I believe in moving on, says Manish. Maybe I have experienced an aspect of life, military service, which says move on, don't be jaded. Well, आपको सलाम कि आपने वो सीखा वहाँ से. It's great. That's your choice. I respect it, but I just hope that the fans stop giving lip service to the BCCI and to the system when the system is built on just bilateral pay bilateral. ठीक है, शायद मैं थोड़ा old fashioned हूँ, कोई बात नहीं. Castle, what a name, Castle with an emoji. It really feels weird that how quickly some people move on from loss of World Cup and teams like Australia judging our Indian pitch condition winning in India against India. Well, that's why they're Australia. And in the last 2 years, Australia have won all 3 ICC trophies there are to be won. 2021 में T20 World Cup और इस साल WTC फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल. हम क्या जीते हैं 10.5 साल में? घंटा. Who will occupy that one opening slot after Rohit Sharma with so many strong? Jaiswal and Gill. Jaiswal and Gill should open for the next decade. प्रशांत कह रहे हैं क्या चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जाना चाहिए? नहीं. देखिए, पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा. तो इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान. इट विल बी लाइक द एशिया कप, हाइब्रिड. निहार, व्हेन पीपल लाइक दादा सेज विनिंग IPL इज डिफिकल्ट देन विनिंग ट्रॉफी सेज इट ऑल. बिल्कुल सही कह रहे हो. ये क्विंटन डिकॉक ने मेरे सामने कहा था 2019 वर्ल्ड कप में एजबैस्टन में अगेंस्ट द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड व्हिच दे लॉस्ट. नो सरप्राइजेस. People get it. To win first, we need to end over celebrating individuals achieving like century. Bilkul, I agree with you. Karma, it's a bitch, isn't it? Sagar keh rahe hain, I felt like a cynic when I was complaining about celebration of individual records during the league stages. Those were the first signs of no one being serious. बिल्कुल सागर, मैंने बहुत लाइव शोज पर अलग प्लेटफॉर्म से पूरे वर्ल्ड कप पे कहा था कि this obsession with one player, this obsession with milestones is not good. And unfortunately, I didn't see it coming. I was wrong. I genuinely believe that India World Cup final jeetega. Even when they had 240 on the board, I believe they could do it. But in the end, that karma word, it does come back to bite you where it hurts.
दोस्तों, I have to hop onto a Zoom call with someone about another project. So I'm already 1 minute late. I'm gonna have to end the stream here. Thank you to all of you who came to watch, who commented. Please come back. Please come. Keep asking questions. Please keep debating with me. Please keep sharing your views. Love you all. आप ही के लिए मैं आता हूँ हर दिन show करना. Like I said, I mean, obviously this is my profession, but I love getting to interact with so many of you, so many of you regular viewers who come. We don't always agree. We have fun though, but it's good to debate and analyze with you rather than me just talking to a blank screen. So thank you to all of you for your support once again. Have a great day. मैं आपसे कल मिलूंगा. जय हिंद.